Good evening. We'll start in a minute or so. So this is our sixth session on LRDI mix. We have seen earlier basics of LRDI as well. Couple of sessions, calculation based DI as well. If you're watching the recording, pause the video, take as much time as you want. For those who are doing it live, you have close to 8 to 9 minutes to try. All questions are on the screen related to this particular set. Take your time. This is a past CAT set. Go on, try. How do we judge questions? If a question starts with if, that means new information is given to us every time. So we need to be very careful while solving that question. This would make it level B, maybe even level C, if you are not comfortable with modifying numbers faster. Because every question starts with if, giving you new information. Which of the following must be false? So others may be true, might be true, but one of them is false for sure. So I'll categorize it as maybe B, B plus, or even C. Definitely not a A. A is the easiest level, abhi kar lo. B is baad mein kar lo, thoda higher level. And C is something chhod dena chahiye hame. So go on, try. Your 8 minutes are on.
Yeah, the timer is on. This is the first set on the screen. Take 4 or 5 minutes, just read, and then I'll start explaining this to you.
Let me try and solve this for you. This is probably because the font size is only 10 units. So you might be feeling that is blood. So once we read this question, there are tickets being bought for platinum, gold, economy classes, and every visitor has to buy a ticket. Visitors are classified as old, middle-aged, or young. Following facts are known about the visitors and tickets on a particular day. 140 tickets were sold. Number of middle-aged visitors was twice the number of old visitors, while the number of young visitors was twice the number of middle-aged visitors. Young visitors bought 38 out of 55 economy tickets that were sold, and they bought half of the total platinum tickets that were sold. The number of gold tickets bought by old visitors was equal to the number of tickets bought by old visitors. All right. And then some questions are there. The problem that I mentioned earlier at the start of session is every question starts with a if. So it presents you a new information, new data. So after you create a table like this, you will have to again rewrite or create a new table every time. So every question gives you if, so you will have to rewrite or create a table. That is the difficulty of this particular set. So while you read, you need to form this opinion. How many rows, how many columns will you need? So you will need here 1 row for old, middle, young, 3 rows, 1 row for total, and 1 for platinum, gold, economy, and total. Because while reading this, I saw there are 3 categories, there are 3 type of people, and then there is talk about total as well. Total tickets sold are 140. The number of middle age visitor are twice of the old age. So if old age visitors are X, middle age are 2X. Young visitors are further twice of middle age. So young will be 4X. So 2X plus X plus 4X. You have sold 7X tickets, and 7X is equal to 140. तो ये 20 times हो रहा है. X is 20 for you. That means old age visitors are buying 20 tickets, middle age are buying 40 tickets, and double of that, 80 tickets were bought by young people. Please observe, the very first sentence gives me at least 30% of the data. By telling me middle age is double of old visitors. So I am taking X and 2X as total visitors. Every visitor has to buy a ticket. हर एक विजिटर को एक टिकट लेना ही पड़ेगा. That is the compulsion here. That is the compulsion here. And furthermore, middle aged are double of the young ones. तो उसको भी हमने आगे डबल कर दिया. So that gives us 20, 40, 80. एक बार एडिशन चेक कर लो. एडिशन is 140. तो use this information thoroughly. Young visitors bought 38 out of 55 economy tickets. Economy, how many were sold? 55. Young ones have bought 38. That means ये दोनों मिलाकर खरीदेंगे 17 tickets. They bought half of the platinum tickets that were sold. If the platinum tickets, if I assume is 2X, ये वाला X confuse मत करना, 2X is platinum, तो young people have bought X tickets, half of it. मतलब इन दोनों ने खरीदा मिलके X tickets. The total number of gold tickets bought by old visitors was equal to the total number of economy tickets bought by old visitors. So if I say this is A, this will also be A. So now listen to this. Every question has a if, every question has a new condition. In such cases, what I prefer is if I can fill the table as much as I can in the form of 1 or 2 variables, I'll prefer that. So let me try to fill as much as I can in the form of 1 or 2 variables. If I take this number as A, this number becomes 17 minus A.
if, please observe, learn these things. This is A and this is A. Total tickets are 20. This becomes 20 minus 2A. Now, because the addition of these numbers was equal to X, this becomes X plus 2A minus 20. थोड़ा प्लस माइनस आपको करना सीखना पड़ेगा यहाँ पे. I am trying to complete the table as much as I can in the form of variables A and X. If there was a third variable, I'll use that. I don't mind. But बाहर से extra variable लेकर आप मत आओ. Now here I am in a fix. ये देखो, this is 80 tickets, this is 38. So 42 remain, 42. So ये दोनों मिलाकर should be 42. उसमें से x इधर है. So I have 42 minus x. जितना हो सके, try to minimize number of variables. Try to reduce the number of variables. So now in this case, I have this position and this position empty. I know there are 40 tickets being sold here, 40 tickets being sold here. If I could subtract these and these, I will have this values in the center. And if I add these three, I will have the value in the end. Let us give it a shot. Let us give it a shot. How can we find the value in the middle? I have 40 minus x plus 2a minus 20 minus further 17 minus a. So this becomes 40 minus x minus 2a plus 20 minus 17 plus a. Be careful. This is equal to 3. This becomes 43. Ye wala a and ye wala a will decrease. This will become x minus a. So what I have for you in the middle here is 43 minus x minus a. Now if I add these vertically, I should have the number in the middle. देखो एक बार check करो. This a and this a will cancel. This x and this x will add up. So you have 85 minus 2x. One more thing you can do is subtract 55 from this. You have 85 minus 2x. So everything matches. Everything matches in the form of a and x. So with two variables, you have managed to fill about 16 boxes. This brings down your calculation drastically. This brings down your calculation drastically. तो एक बार आप कॉपी कर लो इसको. Comment done. Once you finish this in this manner, you will have probably all the answers ready. With two variables, we have completely filled 16 boxes. Two variables we have used. Now, I will need these values in the next table, or maybe I will go back to the original one again and again. What does it say? If the number of old visitors buying platinum tickets
was equal to middle-aged buying platinum tickets, which among the following could be the total number of platinum tickets sold? So what was given to us here, I can use these variables, or see, we have just been told ये number और ये number बराबर है. The old people buying platinum and middle-aged people buying platinum is also equal. These are equal. So basically you just told me if this is 2x, this is x, this must be x by 2 and x by 2. आपने कहा platinum tickets purchased by middle age and platinum tickets purchased by old are equal. Which of these could be, हो सकता है. It's a possibility. जरूरी नहीं है. It's a possibility. So if I start with answer options, अगर ये 34 होता, if this was 34, this would be 17. Can you divide 17 by 2? No. This cannot be the answer. This cannot be the answer. We have to check which of these is a possible value. If 32 was the answer, agar ye 32 hai, this will be 16. 16 by 2, I can take 8, I can take it. It's a possibility. So B is a possibility. B is a possibility. आगे वाले भी चेक कर लो. आगे वाले भी चेक कर लो. Is it possible to have 36 tickets? Is it possible to have 38 tickets? Let us check. Let us observe. Let us learn. थर्टी एट कैन नॉट बी देयर क्योंकि 38 को बाय 2 करके फिर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा. 36 कैन बी देयर. एक बार चेक कर लो. कैन 36 बी देयर? एक बार चेक कर लो. कैन 36 बी देयर? If you take 2x is equal to 36, this will become 18 और ये दोनों हो जाएंगे 9 and 9. तो आंसर इज आइदर बी और द आंसर इज डी. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. अब रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है? व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिंग दिस? क्या चीज इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? डू यू सी हियर, ये जो प्लैटिनम टिकट खरीदे जा रहे हैं, इट इज 20 minus 2a. 20 minus 2a. So that must be a even value क्योंकि 20 minus 2a is a even number. When you take tickets as 36, उसका आधा 18, उसका आधा 9 cannot. The answer is 32. कंफर्मेशन ऑन दिस, समझा क्या आपने को ये? Let us try the next one. Try. आप ये लैंग्वेज पढ़ लो. You will have to have that table ready with you. You must have that table ready with you. ये वाला कॉपी कर लो if you need.
Copy down this table. I will also do the same. Because we are going to use it further for all upcoming questions. So if you keep this table ready with you, आपको बार बार table नहीं बनाना पड़ेगा. Now what is the question here? The old visitors buying platinum tickets was equal to middle-aged visitor buying economy tickets. Then the number of old-age visitors buying gold ticket was. मैं एक बार टेबल आपके लिए कंप्लीट कर देता हूं. This is 20 minus 2a, a. This is 20, 40, 80, 140, 55, 38, 17 minus a, 85 minus 2x, 42 minus x, 43 minus x minus a, x plus 20 minus x plus 2a, x plus 2a minus 20. This is x and this is 2x. You are saying the old age visitors buying platinum, this value is equal to middle age visitors buying economy. Economy middle age is this. इनको बराबर कर देना है आपने. सीधा a का वैल्यू मिल गया. इसका मतलब आपको you have 20 minus 2a is equal to 17 minus a. इधर जाके हो जाएगा 3, इधर जाके हो जाएगा a. A is equal to 3. If a is equal to 3, how many old visitors were buying gold tickets? Gold tickets वाले a हैं, a वाले 3 हैं. Gold tickets. How many visitors were buying gold tickets? Done. Very nice. Next one. Again, we will need the same table. I will go back to it. Not to worry. The number of old visitors buying gold tickets was greater than number of young visitors buying gold tickets. Old buying gold is more than young buying gold. The number of middle-aged visitors buying gold ticket was. This is a question mark. This is a question mark. This value is more than this value. Old buying gold is more than young buying gold. So what is old buying gold? A. You are telling me A is more than this. 42 minus x. So A plus x is more than 42. So you are telling me, or you're asking me, what is this number? Middle age buying gold. That is 43 minus a plus x. Basically, you see here, it is minus x minus a. It is basically minus a plus x. You are telling me a plus x is more than 42. But here it says, because if I make a plus x more than 43, it becomes 0. So the only possible value is 43 minus a plus x and a plus x being 43. क्योंकि a plus x 42 से बड़ा है. This is old people buying gold. This is young people buying gold.
So 43 minus 43 is 0. Based upon given conditions, based upon given requirements, middle-aged people buying gold tickets would be 0. Please observe, confirm your solution. Confirmation on this. Good. Now, which of the following must be false? Which of the following must be false? So before I answer this, maybe I should write down those equations, those terms. We have 20 minus 2a, a, 20, 40, 17 minus a, 38, 55, 80, 140. In exam, you will have a single piece of paper which will have this table. You can leave it there. Maybe you will not need to rewrite it again and again. Here it says number of gold and platinum tickets bought by young visitors was equal. Young visitors ने जो gold और platinum खरीदा वो equal था. So gold is X, platinum is, give me a second. Platinum is X and gold is 42 minus X. तो हो सकता है ना बराबर. X is equal to 21 हो सकता है. Maybe, might be. हमें चाहिए must be false. Number of old and middle-aged visitor bought equal platinum tickets. ये दोनों बराबर करना है. Do you remember? Do you remember in the very first question here? आपने इन दोनों को बराबर किया था ना? आपने इन दोनों को बराबर किया था for 32. तो बराबर हो सकता है. I remember doing this. B is a possibility. B can be done. Number of middle-aged and old visitors buying equal economy tickets. ये economy tickets हैं इनके. A is equal to 17 minus A. A is equal to 17 by 2. ये ना हो पाएगा. This is false. Why? Because number of tickets cannot be a decimal. So see, we were able to solve these questions individually after we put in maybe 4 minutes, maybe 5 minutes in creating this table. And we managed to do this with 2 variables. Avoid unnecessary variables. Until some new data is introduced, don't create or use too many variables. Confirmation on this? Yes. We'll copy paste the table in next session. Done. This is on the easier side. I feel this is category A. A means abhi kar lo easy set. If I remove one of the information, ये ऐसा है. I'm removing this information from the screen. ये नहीं दिया आपको, ये नहीं given है. अब थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा. This will become A plus. लेकिन अभी भी B से नीचे है, C से नीचे है. It is on the easier side. Take 5 minutes.
try to complete the table, go information gone. Let us say that information is not given to you. This is not given to you altogether. This is gone. Chalo, try. 5 minutes is more than enough. 6 minutes is more than enough. Once you complete reading the whole passage, whole set of questions, first devise a plan. How will you represent it?
So let's start solving. All right, let me start. First thing you observe, there is only one, no, there are two questions with if, means a new data is being presented, but the information is fairly simple. You notice further, this is 7 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs, 11 lakhs, 13 lakhs. So there's no need to write so many zeros. I'll simply write the number 7, 8, 9, 11, 13. Everything is in lakhs. So here I've used name as a reference क्योंकि हर line में you see information is about their names. Every sentence is about their names. So I'm removing this part. Let us say this information is not given to you. Given है तो और भी easy, कोई problem नहीं है. Akansh, not Akash, Akansh does not live in Banerghata. So does not, put across Banerghata. और सैलरी वाला देखेंगे. If you want to use it, कोई बात नहीं, use it और easy हो जाएगा आपके लिए question. His salary is a prime multiple of lakh. His salary is prime multiple of lakh. So 7 is a prime multiple, 11 is a prime multiple, 13 is a prime multiple. So his salary is either 7 or 11 or 13. Amit made a call to one of his 4 friends mentioned who lives in Prabandhan Nagar. That means Amit cannot live in Prabandhan Nagar. Now, whoever this friend is who lives in Prabandhan Nagar, his salary was a square multiple of 1 lakh. तो square multiple केवल एक ही है, which is 9 lakh. इसका मतलब है, that means Amit का salary cannot be 9 lakh. जो भी friend stays in Prabandhan Nagar, I don't know the name of the person, stays in Prabandhan Nagar, has a salary of 9 lakh. ये information we will use it whenever we can. क्योंकि देखो इसका सैलरी 7, 11, 13, मतलब ये भी प्रबंधन नगर से नहीं हो सकता. क्यों? प्रबंधन नगर पर्सन अर्न्स 9 lakhs, his salary is 7, 11, 13. So I've used this completely. Ajay's salary is 1 lakh rupees more than the average salary of Akansh and Ashok. What salaries do we have? We have 7, 8, 9, 11 and 13. तो देखो एवरेज जो है अजय का जो एवरेज है इट इज 1 लाख रुपीज मोर देन आकांश एंड अशोक. अब आकांश का सैलरी कैन बी 7 लाख, तो 7 के साथ में 8 का एवरेज 7 + 8 15/2 डेसिमल आ जाएगा, 8 नहीं हो सकता. 7 + 9 16, 7 + 9 16/2, तो इनका एवरेज 8 आता है, लेकिन हमें 1 लाख ज्यादा चाहिए. तो देखो अगर ये आकांश का है, ये अभिषेक का है, तो अगले वाले का फिर से 9 लाख हो जाएगा. आकांश, अभिषेक, तो एवरेज आ जाएगा 8 + 1 आ जाएगा 9, तो इट कैन नॉट बी 9 का पेयर. इफ इट इज दिस 7 + 11, 7 + 11/2, 18/2, 9 + 1, 10 लाख का सैलरी तो है ही नहीं, तो 7, 11 का पेयर भी नहीं हो सकता. If it is 7 + 13/2, which is 20/2, 10 + 1, तो 7, 13, 11 हो सकता है. There is a possibility. तो अगर आकांश का 7 है, that means अशोक will have 13. अगर अशोक का 7 है, आकांश will have 13. क्या किसी और से पेयर बन सकता है? Let's check others also. क्योंकि 11, अगर मैंने आकांश का सैलरी 11 ले लिया, तो अभी 11, 7 तो वी हैव चेक्ड, हो नहीं सकता. 11, 13 हो सकता है. 11 + 13/2, 24/2, 12, फिर +1 करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा 13 से. इट इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स
इसका सैलरी 7 नहीं हो सकता, इसका सैलरी 7 होगा। गिव मी सेकंड। इसका सैलरी आकांक्ष का 7 होगा। इन दैट केस अशोक विल हैव सैलरी 13। अगर आकांक्ष का 13 होगा, अशोक विल हैव सैलरी 11। तो यहां से 11 कट गया, 11 इसका सैलरी नहीं हो सकता। यू वांट टू ट्राई विथ अदर नंबर्स, 11 प्लस 7, फिर वही प्रॉब्लम आएगा। 11 7 18/2 9 प्लस 1 10 नहीं है। 11 18 का एवरेज हो नहीं सकता। 11 9 का एवरेज आएगा 10, तो 10 प्लस 1 करोगे फिर 11 आ जाएगा। वी कांट हैव दैट पॉसिबिलिटी। 11 13 नहीं हो सकता। आकांक्ष का सैलरी 7 11, अशोक का सैलरी 11 13। Used it completely. Amit lives in a city which has shortest name among the all. तो सबसे छोटा नाम किसका है? जोका का है। तो अमित लिव्स इन जोका। अब देखो, प्रबंधन नगर वाले 9 लाख रुपए की सैलरी रखते हैं और वो अमित नहीं है, वो अशोक भी नहीं हो सकते, उनकी सैलरी 11 13 है। तो ये जो प्रबंधन नगर वाले हैं, इट इज आइदर अजय और इट इज अभिषेक। देखो, डू वी हैव एनी मोर हिंट्स हियर? अभिषेक के बारे में कोई बात नहीं हुई है। नो। अभी जहां भी 9 लाख जाएगा इट विल बी प्रबंधन नगर। सो दिस इज द टेबल दैट आई कैन कंप्लीट सो फार। दिस इज द डाटा आई कैन पुट इन सो फार। यहां पर जोका भी नहीं आएगा, जोका का भी नाम ऑलरेडी कहीं आ चुका है। तो हाउ मेनी नेम्स रिमेन? एक तो ये बच गया कूनामंगलम, और एक बच गया वस्त्रपुर। तो दिस कुड बी कूनामंगलम और वस्त्रपुर। बाकी हो गए तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। अजय का सैलरी इज 1 लाख मोर, तो अभी हमने प्रूव किया था 13 प्लस 11 24/2। अरे 7 प्लस 11 रे बाबा, ये ऊपर क्रॉस करो इसको। तो अजय का सैलरी कंफर्म हो गया आपका। 7 प्लस 13 20 20/2 11, ये 11 आ गया। तो प्रबंधन नगर यहां भी नहीं आएगा। तो कोई एक चीज कंफर्म हो गई, प्रबंधन नगर यहां भी नहीं आएगा। ये आ गया आपका प्रबंधन नगर। ये आ गया आपका 9 लाख का सैलरी। सैलरी सबकी मिल गई आपको। ये प्रबंधन नगर आ गया। तो यहाँ पे सिटी नॉट नोन, सिटी नॉट नोन, सिटी नॉट नोन, सैलरीज आर फिक्स्ड। एक बार आप टेबल चेक कर लो। चेक द टेबल, कंप्लीट द टेबल, वील गो बैक टू प्रॉब्लम्स। 5 से 6 मिनट का सेट है फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस। ये देखो, इफ आकांक्ष लिव्स इन वस्त्रपुर, आकांक्ष अगर वस्त्रपुर में रहते हैं, then what is the salary of person living in, what is the average of the salary of the person living in बानेरघाटा एंड कूनामंगलम? उनकी सैलरी का एवरेज क्या होगा? आकांक्ष कहां रहते हैं? आकांक्ष रहते हैं वस्त्रपुर में, वस्त्रपुर में। तो ये हो जाएंगे कूनामंगलम, ये हो जाएंगे बानेरघाटा। कूनामंगलम एंड बानेरघाटा, इनकी सैलरी का एवरेज चाहिए। अब देखो, इट कुड बी 13 प्लस 11/2, it could be 7 plus 11/2. So there are 2 possibilities for this. There are 2 possibilities for this. Data is incomplete, data is insufficient, क्योंकि I can tell you बानेरघाटा कूनामंगलम वाले कौन है। बानेरघाटा कूनामंगलम वाले ये 2 लोग हैं, दिस पर्सन एंड दिस पर्सन। बट इसका सैलरी नोन नहीं है ना। अगर ये 13 है, ये 11 है, तो एवरेज इज 12। ये 7 और ये 11, तो एवरेज इज 9। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस। हु स्टेज इन प्रबंधन नगर? प्रबंधन नगर, प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एरिया में कौन रहते हैं? प्रबंधन नगर में फिक्स है, अभिषेक रहते हैं, कंफर्म है। देयर इज नो अदर ऑप्शन हियर। अभिषेक स्टेज इन प्रबंधन नगर।
अब एक नया डाटा, if Amit and Ajay live in cities with names starting with consecutive alphabets, who stays in Vastarpur? अभी अमित और अजय जो हैं इनके शहरों के अल्फाबेट कंजिक्यूटिव हैं। अमित और अजय, अमित ये हैं और अजय ये हैं। जे के साथ कंजिक्यूटिव अल्फाबेट कौन से हैं? आई जे के। तो आइदर आई नाम से हो या के नाम से हो। तो के नाम से आपके पास है कूनामंगलम, तो कौन रहते हैं वहां पे? ये आखिरी सवाल है, तो आई कैन राइट इट हियर। कूनामंगलम में ये हैं, तो वस्त्रपुर में कौन होंगे? आकांक्ष। हु स्टेज इन वस्त्रपुर? आकांक्ष। तो ये थोड़ा सा कैट से नीचे लेवल का सेट है। आई विल कैटेगराइज इट एज ए, नॉट अ हायर लेवल देन ए। ए आर द इजीएस्ट सेट्स। मूविंग ऑन, लेवल बढ़ाते हैं। Confirmation on this? So take your time. Take 6 minutes. Read everything. Formulate a strategy. How will you represent data? How to minimize variables? There is one question starting with if. One question is which of the following is are true and others are definite. ये भी definite question है, ये भी definite question है. What was the money with Ina in the beginning? What was the total money with all of them in the beginning? Start.
Should I start solving this for you? हाँ, काफी अच्छे लेवल का सेट है ये. It's a very good level set क्योंकि you will have to fill 12 or 15, maybe 16 blanks, and again, like the first set, minimize the number of variables. Ina, Mina, Dika had some money with them. Let me go to this. Ina, Mina, Dika had some money with which they decided to buy shares of two companies, Bindas and 𝒘𝒂𝒂𝒏𝒊. The amount with Mina was 1/3 of the total money available with three of them. Ina and Mina spent equal amount of money in buying Bindas shares. Amount spent by Mina on buying 𝒘𝒂𝒂𝒏𝒊 was twice that of Dika. The amount spent by Ina while buying 𝒘𝒂𝒂𝒏𝒊 was 50% more than the amount spent on 𝒘𝒂𝒂𝒏𝒊 share by Mina and Dina together. So you see, they are all interlinked. They are constrained in half, double, equal, 1/3. The amount of money spent by Dika was 9, and so on. So let me start this from the first sentence. The amount, and there is also money left with them. There is a talk about money left with them. So you will need money spent on these, money left, and money initial or total money they had initially or in the beginning. So individually, if I count, so 1 2 3 4 4 into 3 12 plus 4 16 boxes we need to fill and minimize the variables as well. And there is only one question with if, so there is not going to be much customization. तो एक बड़ा टेबल बनाओ, अच्छे से fill करो. So I'll start from this data, which says the initial amount with Mina was 1/3 of the total amount with all three of them. So if I imagine total amount as 3x, amount with Mina was x. x लेके 1/3 क्यों करना? That will complicate things. Ina and Mina spent equal amount of money in buying Bindas shares. So Ina and Mina, if the amount spent is A, it is A here as well. Ina and Mina, amount A and A. Amount spent by Mina in buying 𝒘𝒂𝒂𝒏𝒊 shares was twice of Dika. So if this is B, this should be 2B. The amount spent in buying 𝒘𝒂𝒂𝒏𝒊 shares by Ina was 50% more than the amount spent by Mina and Dika together. तो इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा, आई विल रेज इट 50%. राइट नाउ व्हाट इज द एडिशन? एडिशन इज 3b. देखो 50% बढ़ाना है इज मल्टीप्लाइंग 3/2. तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2. अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है और इसको 3/2 लगाओगे तो डेसिमल हो जाएगा. तो देखो हाउ क्लेवरली आर वी एडजस्टिंग दिस. इफ दिस इज 2b, दिस इज 4b. ये डबल था. नाउ एडिशन इज व्हाट? एडिशन इज 6b. 6b में यू कैन अप्लाई 3/2. 3/2 अप्लाई करना मीन्स रेजिंग 50%. सो 6 का 3/2 9b. So I have used every information up to this point. यहां तक सब कुछ हमने इस्तेमाल कर दिया है. The amount spent by Dika on Bindas share was 1/9 of the initial money with all three of them. तो जो डीका है बिंदास पे जो खर्चा करेगा वो इसको डिवाइड बाय 9 करना है. ये 9 का मल्टीपल है क्या? नहीं है ना. तो इसको 9 का मल्टीपल बनाओ. इफ आई मेक इट 9x तो ये 3x हो जाएगा और ये x हो जाएगा. So far observe, I have to use 3 variables so far. One is x, one is b and one is a. Everything has been solved up to this point. मुझे इस नंबर को डिवाइड बाय 9 करना था. I had to divide this number by 9. तो मैंने 9x अज्यूम करके यहां पे x ले लिया. डिवाइड बाय 9 हो गया. The amount spent on 𝒘𝒂𝒂𝒏𝒊 share by all three of them was 1/3 of the initial money with them. जो 𝒘𝒂𝒂𝒏 पे उन्होंने खर्चा किया
दैट वाज, जो झकास पे उन्होंने खर्चा किया, दैट वाज 1/3 ऑफ द इनिशियल मनी विद देम। तो ये तो 9x है इनिशियल मनी, तो दिस मस्ट बी 3x। तो देखो ब्यूटिफुली एक अच्छा लिंक मिल गया। व्हाट इज एडिशन ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 2? 15। 15b is equal to 3x. That means x is equal to 5b. तो एक लिंक मिल गया। सो दिस इज हाउ यू रिड्यूस वेरिएबल। अब मैं यहां पर x लिख सकता हूं या फिर मैं यहां पर b लिख सकता हूं। तो वन वेरिएबल आई कैन रिड्यूस। अब बच गया केवल a, दैट इज न्यू टू अस। Let me read this one more time. The total amount spent on Jackass by all three of them was 1/3 of the initial money with them. Initial money I have taken 9x, उसका 1/3, और इन सब का एडिशन 15b। 15b is equal to 3x, x is equal to 5b। देखेंगे आगे देखेंगे। Done, done, done. Meena and Dika had equal amount of money left with them after making purchases. जो कौन कौन? मीना एंड डीका हैड इक्वल मनी लेफ्ट विद देम। अब देखो ये 3x रुपीज लेके निकले थे, 3x रुपीज लेके निकले थे, इन्होंने 4b और ये खर्चा कर दिया, तो व्हाट मनी रिमेन्स विथ हिम? 3x माइनस 4b माइनस a। तो मीना एंड डीका हैड सेम मनी लेफ्ट विद देम, तो ये भी आ जाएगा 3x माइनस 4b माइनस a। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच कैलकुलेशंस। कैड में बहुत कॉमन ऐसे क्वेश्चंस, रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे इंफॉर्मेशन को। मनी लेफ्ट विथ ईना आफ्टर मेकिंग द परचेज वाज 1/15 ऑफ द टोटल अमाउंट विथ ऑल थ्री ऑफ देम। अब ये अलग खेल खेल रहा है। अब मुझे कह रहा है कि जो टोटल मनी थी उसको डिवाइड बाय 15 करके यूज करो। अगर डिवाइड 15 तो करना मुश्किल है यहाँ पे। वाई? क्योंकि मैं 9x ले चुका हूं और उससे सब कुछ रिलेट कर चुका हूं, 3 जगह पे x आ चुका है। तो यूजुअली आई विल से 15 और 9 का कॉमन मल्टीपल 45 लेके सॉल्व कर दो। आई कैन डू दैट, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि व्हाट डज इट से? इट सेज द मनी लेफ्ट विथ ईना आफ्टर परचेजिंग ऑल ऑफ दीज वाज 115। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 9x बाय 15 यहां डाल देता हूं, 9x बाय 15 में यहां डाल देता हूं। देखेंगे which turns into 3 कैंसिल, 3/5x। देखेंगे चलो। The amount spent on Jhaka's share, please observe, amount spent on Jhaka's share by Meena and Dika together was 2 lakh rupees more than the money left with two of them after making purchases. अभी भी I am not able to relate A with anything. A का लिंक मेरे को चाहिए, somehow I need link of A. A का लिंक नहीं आएगा तो I will not be able to solve any of this. Let us read this part one more time. The amount spent by Dika in buying Jhaka's share, ये वाला हमने यूज नहीं किया क्या अभी तक? ये वाला हमने यूज नहीं किया। Amount spent by Dika in buying Jhaka's. Dika in buying Jhaka's. It was equal to amount left with Meena आफ्टर मेकिंग द परचेजेस। ये इंफॉर्मेशन हमने अभी तक यूज नहीं करी है। देखो मीना के पास क्या पैसा बचा है? मीना के पास ये पैसा बचा है, और डीका ने कितना खर्चा किया जकास पे? 2b। ये दोनों बराबर हैं। तो देखो व्हाट आई हैव इज 2b इज इक्वल टू 3x माइनस 4b माइनस a। थोड़ा रीअरेंज अगर कर दें, इफ आई से a ऑन दिस साइड, तो आई हैव 3x माइनस 6b। अब देखो यहां ध्यान दो, व्हाट वाज दिस इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना। 3x किसके बराबर था? 15b के। तो 15b माइनस 6b इज इक्वल टू 9b इज इक्वल टू a। अब आप देखो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ b। अभी मेरे सामने हर एक चीज b के फॉर्म में आ गई। x इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 9b। अब देखो मैं अजम्पशन कैसे ले रहा हूं, ये थोड़ा आगे आपको ट्रिकी लगेगा, बट ये सीखना आपको। आई एम assuming the value of b is equal to 1। अगर b का वैल्यू 1 है तो ये हो गया आपका 9, 4, 2, तो ये आपका हो गया 15। तो
ये आपका हो गया, क्योंकि आपने कहा था 3x इज इक्वल टू 15b, तो 9x विल बी इक्वल टू 45b, तो ये वैल्यू आपका हो गया 45. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर. This is 9. I have taken b is equal to 1. ये 2, this is 15. तो ये 45 हो गया. What was x? What was 3x equal to? 3x was equal to 15b. तो ये हो जाएगा आपका 15. a का वैल्यू कितना है? 9b. 9b. तो this is 9. This is 9. ये x का वैल्यू है. x is equal to 5b. तो ये 5 हो जाएगा. तो see you can add everything now. 9 plus 9, 18 plus 5, 23. अब देखो ऑन दिस साइड आपने x को क्या लिया है? x को लिया है 5b. यहाँ 5 पुट कर दोगे, 5b कट जाएगा 3b. 3b इज इक्वल टू 3. ये कितना था आपके पास? दिस वाज 15b. 15 माइनस 4 माइनस 9, ये आपका 3x है. ये 15 के बराबर है. 15 माइनस 4 माइनस 9, तो ये 2 के बराबर आ गया. तो ये भी 2 के बराबर आएगा. तो 3 प्लस 2 दैट इज 7. ऑब्जर्व करो, सब मैच हो रहा है. दिस इज 30 प्लस 15 45, मैच्ड, परफेक्ट. 9 प्लस 9 18 प्लस 3 21, मैच्ड. 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15, मैच्ड. 5 प्लस 2 प्लस 2 9, सब मैच हो गया, परफेक्ट. द टेबल इज कंप्लीट. अब ये क्या किया आपने? b इज इक्वल टू 1 लेके सारा का सारा सॉल्व कर लिया. यू कंप्लीटेड एवरीथिंग बाय अज्यूमिंग b इज इक्वल टू जस्ट 1. अब थोड़ा आप ध्यान दो यहाँ पे, अभी भी दिस इंफॉर्मेशन इज स्टिल नॉट यूज्ड. द अमाउंट स्पेंट ऑन झकास शेयर्स बाय मीना एंड डीका टुगेदर. मेरे हिसाब से मीना और डीका कितना खर्च कर रहे हैं झकास पे? मीना एंड डीका झकास पे खर्च कर रहे हैं मेरे हिसाब से 6 रुपीज. 6 रुपीज. इट वॉज 2 लाख रुपीज मोर देन what was left with two of them after making purchases. अभी इनके पास लेफ्ट ओवर कितना है? 4. तो मेरे हिसाब से 2 रुपए का गैप आना चाहिए था. 2 रुपए का. हाउ मच हैव दे स्पेंट? 4 and 2 6. मीना एंड डीका ऑन झकास. हाउ मच हैव दे गॉट लेफ्ट ओवर? 2 plus 2 4 रुपीज. 2 का गैप है, बट एक्चुअल गैप 2 लाख रुपए का है. मतलब ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो लाखों में है. ये 9 लाख है, ये 5 लाख है, 23 लाख है, 942, ये सारे लाखों में है. प्लीज पे अटेंशन टू दैट पोर्शन अगेन. थोड़ा ध्यान दो उस चीज पे फिर से एक बार. मीना एंड डीका आर स्पेंडिंग 4 plus 2 6 lakhs, जो कि 2 लाख रुपीज ज्यादा है देन देयर सेविंग. उनका सेविंग 4 लाख रुपीज है. तो 6 lakh and 4 lakh have a gap of 2. Everything matches beautifully. अब आंसर्स की ओर चलते हैं. ये देखो, ये टेबल मैंने आपके लिए बना रखी है. ये सारे नंबर लाखों में. एक बार चेक कर लो. वर्टिकल 99523, 99523, 94215. चेक वर्टिकली. झकास. 94215, 3227, 3227, 2115, 945. एवरीथिंग मैचेस. अब ये कह रहे हैं अगर बिंदास का एक शेयर 5,000 रुपए का है तो फाइंड द नंबर ऑफ बिंदास शेयर बॉट बाय ऑल 3 ऑफ देम. 5,000 रुपए का है. बिंदास में कितना खर्चा किया इन्होंने? 23 के बाद लाख लगेगा. लाख मीन्स 5 शून्य. 1 शेयर इज वर्थ हाउ मच? 1 शेयर इज वर्थ 5,000. तो 0 0 कैंसिल. ये जब कैंसिल करने आओगे 46 टाइम्स, सो 460 शेयर्स. 460 shares. What was the money with Ina at the beginning? Ina first person है और ये लाखों में है डायरेक्टली. ये डायरेक्टली लाखों में है. तो 21 के पीछे आई एम लुकिंग फॉर 5 zeros. Which of the following statements are true? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सच हैं? The money spent on purchase as a percentage of money available with an individual in the beginning was highest for Dika among the 3. तो डीका ने सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया. डीका, अब चेक कर लेते हैं डीका ने कितना खर्चा किया. डीका ने खर्चा किया 7 out of 9. क्या ये हाईएस्ट परसेंटेज? 77.77%.
Read that part. Money spent on purchasing as a percentage of money available with individual. ये डी का है. अभी ईना ने कितना खर्चा किया? 18 आउट ऑफ 21. सो 18 आउट ऑफ 21 कैंसिल कर दिया मैंने यहां से 3, तो 6 आउट ऑफ 7. अब 1/7 कितना होता है? 14.28. 14.28 इंटू 6, तो बेटा 85% से ऊपर चला गया ना किसका? ईना का परचेज. अब कौन बच गए? मीना. अब देखो डी का से ज्यादा है ना इनका. द ऑप्शन सेज डी का हाईएस्ट था, तो 1 तो ट्रू नहीं है. मैं क्यों चेक करूं ईना का? देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड फॉर दैट. आपका ईना का ही ज्यादा हो गया, तो व्हाई शुड आई चेक फॉर मीना? जरूरत ही नहीं है. इफ यू वांट टू चेक, इन्होंने कितना खर्चा किया? 9 + 4 13 आउट ऑफ 15 इंटू 100. तो यू रिमेंबर 100/15 क्या होता है? 6.66. सो 13 इंटू 6.66. तो ये भी आप देखो 78 पॉइंट से ज्यादा आ गया ना, बिकॉज 6 इंटू 13 78, पीछे से एक और 7 कैरी आएगा, 85 से आगे आएगा आपका नंबर. तो डीना से तो हाईएस्ट है ना, तो ऑप्शन 1 इज नॉट ट्रू. The three of them were left with a sum of 7 lakh after making purchases. Yes. So second is true. Only 2 is true. देखो समझो. Observe. What was the total sum of money in rupees with 3 at the beginning? तो ये हमने प्रूव किया. टोटल मनी was 45 lakhs. ये रहा. आते हैं बेटा, अभी भी कैट में से क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू. आपको बड़ा इजी लग रहा है, बट जिस तरह से हमने यहाँ पर वेरिएबल्स मिनिमाइज किए, देखो कितना हमने प्ले अराउंड किया विथ ए बी एक्स. एक बार एक्स का रिलेशन आ गया, आई कैन नॉट चेंज एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. अभी ए बाकी था, एक्स और बी का रिलेशन आ चुका है, तो आई कैन नॉट रीराइट द होल टेबल 10 टाइम्स. मैंने कहा होल्ड करते हैं, कैन आई कन्वर्ट ए ऑल्सो. अगर ए कन्वर्ट नहीं हो पाता तो ये सारे क्वेश्चन इफ वाले हो जाते, ये सारे क्वेश्चन इफ वाले हो जाते आपके. बिकॉज अगर ये ना मिलता, ये ना मिलता, तो केवल आपको ये मिलते एक्स और बी के फॉर्म में. आप सिंगुलर वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते कि लाख में है कुछ और है. फॉर दैट यू नीड टू बी एबल टू रिलेट ए विद द अदर टू वेरिएबल्स. Abhi, I'll see you in the next session. That will be on linear equations. Today we'll be doing integral solutions. Take your time, complete the table, copy this down, comment done. एक बार done comment करो. ये कहां से आया? Where did we get this? ये पूछ रहे हो आप? Okay. So यहाँ पे the expenditure on झकास was 15. ये पढ़ो, ये पढ़ो. The amount spent on झकास share by 3 of them together was 1/3 of total initial amount with them. हमने टोटल 9x लिया था, उसका 1/3 यहां पर आ जाएगा 3x, और इनका एडिशन है 15b. सो 15b इज इक्वल टू 3x. यस यस, ये हिंट हमें दिया हुआ था, वी रिलेटेड फ्रॉम देयर. ये थोड़ा आप ध्यान दो. हाउ डिड वी गेट दिस? दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट. दिस हिंट वी मिस्ड आउट बाय सॉल्विंग. ये हमने नहीं चेक किया था. द अमाउंट स्पेंड बाय डीका इन बाइंग झकास शेयर्स was equal to amount left with मीना. जो डीका का अमाउंट यहां पर है, which was 2b, it is equal to amount left with मीना. मीना का बचा हुआ पैसा, which is 3x minus 4b minus a. उससे इक्वेट कर दिया हमने. जॉब इज डन. यस. Chalo. Then I'll see you in the next session on linear equations.